Good morning. We can start with the leg stretching. Starting with the first thing, and that is from the like normal position. You have to spread the leg completely wide and open up the hip joints completely. I am showing how it would be, and you can try. It is sequence of exercises. So spread the both leg wide. From this position, firstly, just try to push it down. I think your camera is off. These two devices are there, so you can check. I know this is not working. Continuously bend and try that the knees are not folding when you are bending. Your chest is always upraised like this. See, uh, you don't have to bend the back. Try that कि आपका जो upper body है वो completely straight हो. Relax. From the same position, just try to bend in the sideward direction with the spreaded legs without reducing the angle between the leg. Try to stretch completely. Relax. In the butterfly, push the knees downward. Continuously push the knees down. Try that it is touching the floor. Relax. From the same position, try to stretch a little bit forward from this position. Elbow को बस जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे and elbow को आगे slide करेंगे. Instead of sliding the entire body, try to put the elbow and try to slide the elbow forward. जितना elbow आपका दूर जा सकता है उतना elbow दूर लेके जाएंगे. Try to stretch completely and then come back. When you are stretching it, आपके glutes maximum में completely stretch होगा means your outward side of the thigh, which is near the pocket. Try to stretch in the same way, and once you are coming here, then try to twist it completely. In opposite direction also, putting the hand on the floor, try to stretch side. Yeah. Put the hand on the edge of the triceps, means triceps and the elbow part. Completely edge में रखेंगे. Now try to push it back. Elbow से completely force लगाएंगे पीछे की तरफ and continuously push कीजिए. जितना भी ज़्यादा पुश कर सकते हैं उतना ज़्यादा पुश करेंगे. द सिमिलर वे यू हैव टू डू विथ अदर लेग आल्सो. अगर पैर स्लिप कर रहा है तो आप दूसरे हाथ से उसे सपोर्ट दे सकते हो. अदरवाइज यू कैन जस्ट इफ फ्रॉम साइड टू डायरेक्शन इट विल विजिबल कंप्लीटली पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे. रिलैक्स. कपोतासन की पोजीशन से नीज को नीचे पुश करेंगे. दूसरा हाथ आपका कंप्लीटली जमीन पर स्ट्रेट.
from the other side also doing the same. Yeah. Now from this position, just stretch and try to stretch, then come back. These are just kind of first layer things. Means आप इसमें हल्का हल्का स्ट्रेच कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस होगा, you would be getting the things की in which direction we are moving. Stretch it forward completely, then come back, stretch it with the middle knees, middle split with the knees. Once or twice only we are doing, and then we would be using these stretchings for the advanced practice. As of now, the purpose is for opening the legs. Completely stress कीजिए. From the middle split. Relax. Uh, Wait, I have to vary, so I would be. If it is away, it is fine. Pooja ma'am, I think you have pinned another video because everyone is able to see. Yeah, because all the cameras are off. I can't see anybody. I think check the connection because you are visible to me and everyone is able to see me. So you can what you can do कि एक बार आप log off कीजिए फिर log in कीजिए, so it might help. Okay, okay. Maybe a setting she's off the camera, she's not given. So next thing which we have to do is again for the leg stretching. And is that visible now? No, all the cameras are off for me. What you can do in the setting, it is there like it might be enable कि आपने एक ही कैमरा अलाउ किया हो या फिर only audio अलाउ हो, so you can check that in setting में जा करके. And otherwise क्या कर सकते हैं आप कि दूसरे Gmail से login कर सकते हैं if that is visible. Okay, yeah, now you're visible. Yeah, fine. You can make it to landscape कि अभी orientation auto rotation on कर दीजिए, so that will Yes, now it's visible. then fine. So nothing else, like we haven't done so many things. We are just opening up the legs. So that would be normal. You can continue from this position. Okay. So what we are doing now? We are just opening the legs with different stretching. I am telling the Okay, next stretch. okay. You have to follow from I'll here. I'll follow. So next thing which we have to do after this position is from the fourth step of Surya Namaskar. Go to the fourth step of Surya Namaskar, having the knee on, having the hand over the knee, and push it completely in opposite direction. Means अगर आपका पैर लेफ्ट में जा रहा है तो आपका neck right में fold होगा. And the same way you have to do it 8 to 10 times with one leg, and then with other leg we have to do the same. It might be easily visible कि आप अपने पैर को completely outward push कर रहे हैं and then you are taking the another direction with the neck. दूसरा हाथ आपको जमीन पर रेस्ट कर रहा है. From the fourth step of Surya Namaskar.
मुझे हम ट्राई की पीछे वाले पैर पर नी जमीन पर टच ना हो एज यूजुअल इन द फोर्थ स्टेप सो दैट दोनों लेग में कम्प्लीटली स्ट्रेच आए। करते रहिए सभी, जितना भी पुश कर सकते हैं उतना आप अपने हथेली से पुश करेंगे नी वाले रीजन। या एक बार होने के बाद दूसरे पैर से भी ट्राई करेंगे सेम स्ट्रेचिंग। ट्राई टू स्ट्रेच विथ अदर लेग ऑल्सो। Continuously push it outward and look in opposite direction. One of the stretching for the hamstring muscle and hip joint also at the same time. Relax. Once everyone show me the level of your sideward split so that I can proceed in that way कि particularly जो भी आप आसन करेंगे I would be having that in mind कि आपका sideward split का level कितना है, so आपकी exercise उसी के according रहेगी। So sideward split means उन स्टेप से आपको कंप्लीट अपने पैर को सामने की तरफ स्ट्रेच करना। भले ही अभी वार्म अप नहीं हुआ है आपकी बॉडी का, हमें इसे कैसे परफेक्टली करना है आई वुड बी शोइंग, बट करेंटली आप एक बार जस्ट करके दिखाइए सो दैट आई वुड बी गेटिंग द वे कि आपका कितना साइड स्प्लिट हो गया। इवन इफ इट इज लेवल और दिस लेवल एक बार आप करके देखिए भले ही जितना भी जाए सो दैट इट वुड बी बेटर टू एनालाइज। Fine, come back up to yeah. So more or less everyone is in the way of middle split, uh, like sideward split, and Manisha आपको उसमें भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, so everything would be relevant for you and everything would be you can say कि applicable and इसमें कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि सारी स्ट्रेचिंग आपको हेल्पफुल होगी। अभी काफ़ी उसमें स्कोप है एंड पूजा मैम एंड कुंदन सर हल्का एंड प्रगति मैम हल्का सा भी डिफरेंस है मीन्स when you are sitting completely there is a bit gap in between or you can say there is a scope of perfection, so you have to work on that and रचिका मैम आपका वो वाला पार्ट सही है, so आपको आई वुड बी टेलिंग कि वो 180 से ज़्यादा कैसे जाएगा मीन्स आफ्टर अ लेवल 180 से ज़्यादा भी हम उसे ले जा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा मीन्स 180 मीन्स दिस इज द स्ट्रेचिंग एंड 180 प्लस मीन्स द लेग वुड बी गोइंग अवे more than that, so we would be looking at that, so we can start with the stretching now and later हमारी जो स्ट्रेचिंग रहेगी उसमें आप अपने लाइक पैर पर सॉक्स पहन लेंगे तो इजी रहेगा, बट अभी क्योंकि मैंने पहले नहीं बताया था, सो इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट वी वुड बी डूइंग विदाउट दैट, बट आफ्टर सेशन आई वुड बी जस्ट टेलिंग यू द वे आप बाद में उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। So for current purpose, we would be doing the stretching with the help of chair, and then we would be going for the sideward split, middle split, then the twisting of the knee, twisting of the ankle, and उसके बाद hip joint opening means आपका पैर जब सिर के पीछे जा रहा है, तो ये सारी चीज़ कवर करने वाले हैं। So let without wasting time, let's start with the chair. You can have the chair with you. If you are having the chair with you, and we can start with the first session. अगर चेयर नहीं है तो आप पास में अगर बेड है या फिर टेबल है उस पे भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। चेयर एंड बेड पे भी सेम लेवल का एलिवेशन आपको मिल जाएगा। द फर्स्ट स्ट्रेचिंग वुड बी फ्रॉम द लोएस्ट ऑफ शोल्डर स्टार्ट having the leg on the chair and continuously pushing it back. So this is it. You can take your time अगर आपके आसपास चेयर नहीं है आप चेयर ला सकते हैं एंड अदरवाइज आप बेड के साथ भी कर सकते हैं एंड that way we would be able to stretch the leg properly. Yeah, Pujam, that is fine. The wall like window would be also there giving the support. Continuously push downward, pelvic region to continuously push kar. Yeah, what you can add additionally to that
इसमें जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहे हैं, उस एक्सट्रीम पोजीशन पर जा करके 15 तक की काउंटिंग कीजिए माइंड में, एंड देन यू वुड बी कमिंग बैक, सो इट वुड बी मेकिंग योर बॉडी इंड्योर फॉर दैट एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे एंड 15 सेकेंड्स का होल्ड दीजिए। आई थिंक इट इज डन नाउ फ्रॉम वन लेग। आप दूसरे पैर से भी सेम स्ट्रेचिंग ट्राई कीजिए। 15 सेकंड का होल्ड दीजिए एक्सट्रीम पोजीशन में। शुरू में पहले स्ट्रेच करेंगे एंड उसके बाद 15 सेकंड का होल्ड करेंगे। Relax. Deeply inhale and exhale. While standing, चेयर का भी फिर से यूज आएगा। अभी जस्ट नेक्स्ट स्ट्रेचिंग के लिए आपको और हैमस्ट्रिंग से ओपन करनी पड़ेगी। सो goes like this. Try to stretch it downward completely, and it will be taking 1 minute only. What you have to do, upper body को यूज कीजिए एंड आपके हैमस्ट्रिंग मसल में completely स्ट्रेच आएगा। Try to take it as much down as you can. You can see my legs; they are not folding from the knees. They are completely straight है। पीछे एक completely straight line जैसा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि घुटने से बिल्कुल भी ऐसा fold नहीं है। So the same you have to repeat, and 10 से 15 बार completely नीचे stretch करेंगे। upper body को loose कीजिए and नीचे अपने extreme position तक जाएंगे। Ten to 15 times more, then we can proceed. Relax. After that, just one more thing. Again, आप bend करेंगे downward. Now this time, try to take the fingers as much away as you can. अपनी बॉडी को ट्रायंगल बनाना है। मीन्स आपके पैर सीधे हो, आपका हाथ जितना भी दूर जा सकता है उतना दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली आप उसमें जमीन को टच कर सकते हैं, बट बाद में आपको जमीन से हाथ को हल्का सा ऊपर रेज रखना है। हैमस्ट्रिंग मसल में कंप्लीटली स्ट्रेच आएगा। ट्राई टू डू। आपने ट्रायंगल बनाया अपनी बॉडी को, अपने हाथ को जितना भी दूर ले जा सकते हैं उतना दूर लेकर के जाएंगे विदाउट बेंडिंग द नीज। पहले आप जितना भी आगे ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाएंगे, फिर जमीन से अपने हाथ को उठा देंगे। या फील द स्ट्रेच नाउ। एंड जमीन में जैसे हम टेंड कर रहे हैं, मीन्स आपकी उंगलियां और भी आगे जाने की कोशिश कर रही हैं बट वो जा नहीं पा रही हैं, वैसा फीलिंग आना चाहिए। एंड कुंदन सर करेक्ट कीजिए। What would be happening in that कि आपकी बॉडी क्योंकि सीधी है एंड आपका हाथ जितना भी दूर जाएगा उतना ज़्यादा हैमस्ट्रिंग मसल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती जाएगी। मनीषा पैर सीधा रखें, स्टैंड एट प्लेस लाइक द थर्ड स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार एंड उस पोजीशन से जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स एवरीवन। Next stretching for making the legs comfortable. Spread the both leg wide and कमर पर हाथ रख सकते हैं आप, और अदरवाइज लेकर हम इसमें हाथ सामने रखेंगे। कंप्लीटली आप साइड पे बैठिए। Once you are comfortable while standing from this position, then you will be sitting at an side, and जब आप इसमें comfortable हो जाएंगे तब हम डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं हाथ की पोजीशन का। हाथ की पोजीशन ये सबसे इजी है एंड इससे हल्का सा डिफिकल्ट रहेगा जब आपके दोनों हाथ सामने रहेंगे। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट आप इसमें चेंज लाएंगे। एंड द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज फॉर द ओपनिंग ऑफ द लेग फॉर एडवांस स्ट्रेचेस।
आपके बैक में कंप्लीटली ड्यूरेंस आएगा एंड इजीली यू विल बी एबल टू परफॉर्म द थिंग्स। कमर पर हाथ रखिए एंड नीज को बेंड करते हुए अल्टरनेटिवली सिट कीजिए दोनों पैर पर। ट्राई कीजिए कंप्लीटली सिट होने के लिए। जितना वो स्मूथ रहेगा उतना अच्छा रहेगा। 10 to 15 टाइम्स इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी हो कि आप 20 से 25 बार भी कर सकते हैं। देखने में ये सारी स्ट्रेचिंग्स काफ़ी इजी हैं, बट जब आप एक साथ ये सारी चीज़ें एक साथ करेंगे तो आपको जो ओवरऑल जहाँ तक आपको जाना है डेस्टिनेशन इन द लेग स्ट्रेचिंग दैट वुड बी कंप्लीटेड एंड इट इज़ ऑन द वे। रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट थिंग इज नाउ फ्रॉम द चेयर अगेन एंड दीज जो भी हमने अभी बीच में किया ये सारा फिलर्स था आपके उस लेग स्ट्रेचिंग की पहली एक्सरसाइज जो हमने चेयर के साथ की थी उसके लिए। अभी जो नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है उसका टारगेटेड एरिया दूसरा है एंड उसके बाद उससे रिलेटेड स्ट्रेचिंग रहेंगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दिस, यू आर कमिंग इनटू दिस पोजीशन, पुटिंग द लेग on the edge and then stretching the leg backward like this. You can cover these things. Uh, then we can proceed further. आप अपने पैर को एज पर रख सकते हैं like this and then you can stretch it back. एक पैर से होने के बाद दूसरे पैर से भी आप रिपीट कर सकते हैं। Relax. Moving to the next stretching. Putting the leg folded on the edge. आपका पैर घुटने से मुड़ा हुआ है मिडिल स्प्रिंग के जैसा एंड आपने उसे एज पर रखा है चेयर के। दूसरा पैर आपका कंप्लीटली जमीन पर स्ट्रेच हो रहा है साइडवर्ड लाइक दिस एंड फ्रॉम दिस पोजीशन पहले तो स्ट्रेच करेंगे अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक। मान लीजिए लेट्स से दिस इज माय एक्सट्रीम पोजीशन, आई वुड बी गोइंग, लेट्स से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीटली नहीं है तो दिस वुड बी योर एक्सट्रीम पोजीशन। हल्का सा बेंड रखिएगा दोनों पैर के बीच में। Then you have to slowly move the hands away like this and feel the stretch. जितना दूर आपका हाथ जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रेच आता जाएगा and the same you can back. It would be possible to go with the window also, just उसमें elevation हल्का सा ज़्यादा रहेगा, so that would be possible. From that position जमीन को टच करने की कोशिश कीजिए। पहले पैर को स्ट्रेच कीजिए कंप्लीटली एंड हल्का सा दूर लेकर के जाइए पैर को। हाँ,
बॉडी को बीच में रहने दीजिए एंड अपने एक हाथ को अपने थाइस पर रखेंगे पीछे से एंड उसे पुश करने की कोशिश कीजिए दूसरे हाथ से। पहले बीच में आ जाइए एंड रनिंग फॉर getting it more than 180 means from this position it is going sideward and you will pushing it from this position. Yes. After doing it from one then you can try with the leg also. The similar stretching will be there. करते हैं you can also do it means दूसरे हाथ से अपने थाइस के ऊपर पैर हाथ रखेंगे और उसे नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। Yeah. Once you are done you can relax. जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा आप रिलैक्स करेंगे उसको। Relax. नेक्स्ट स्ट्रेचिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। इस बार आपका जो पैर अभी दीवार पर जा रहा था वो फोल्ड था या फिर जो पैर चेयर पर जा रहा था वो फोल्ड था। अभी आपका जो पैर ज़मीन पर रहेगा वो फोल्ड रहेगा एंड अदर लेग वुड बी स्ट्रेट। इट वुड बी लाइक दिस। The leg is like this. Now you have to take the leg as much away as you can. दूसरा वाला पैर completely सिर्फ एज पर रहेगा। आप एक ओरिएंटेशन देख लीजिए। अगर ये पैर डाउन रहेगा तो स्ट्रेचिंग हल्का सा डिस्टर्ब हो जाएगी। मीन्स आपके पैर का ओरिएंटेशन खराब होगा। सो उसके लिए आपको ये पैर हमेशा ऐसा एंकल रेज्ड रखना है एंड फ्रॉम दिस पोजीशन अब आप इजीली चेयर को छोड़ दीजिए जैसे है। अब आप ज़मीन पर फोकस कीजिए। फ्रॉम दिस पोजीशन आपको कम्प्लीटली कोशिश करना है कि आप उतना एक जगह पर रहें एंड फ्रॉम दिस पोजीशन यू आर ट्राइंग टू पुश इट डाउन। मीन्स आप अपने आप को नीचे लेकर के जाएंगे तो ये जो पैर चेयर पर है एलिवेटेड इन दिस यू वुड बी गेटिंग टू मच स्ट्रेच एंड इन दैट वे यू कैन ट्राई टू सिट एंड यू हैव टू इंश्योर कि आपकी बॉडी यहाँ से ऐसा लूज होकर भी नहीं बैठ रही है। आप एंकल के ऊपर नहीं बैठेंगे। पैर आपका हमेशा इस पोजीशन पर रहेगा। एंकल आपका ऐसा बीच में नहीं आएगा। एंकल हमेशा उसी लाइन पर हॉरिजॉन्टल रहेगा। यू कैन सी दूसरा वाला पैर बाहर की तरफ है। फ्रॉम दिस पोजीशन आई विल बी गेटिंग स्ट्रेच। सर एंकल अभी अंदर है उसे बाहर कीजिए। मीन्स पैर का एंकल जो अभी अंदर की तरफ है मीन्स इनिशियली जो जमीन का पैर ऐसा अंदर की तरफ फोल्डेड है इसको कभी लोग ऐसा बाहर की तरफ लेकर के जाएंगे सो दैट द स्ट्रेच वुड बी मीन्स ये अगर अंदर रहेगा तो स्ट्रेच हल्का सा डिक्रीज रहेगा। तो ट्राई टू टेक इट अवे। अविनाश हाथ कहाँ रहेगा? हाथ would be near like this Okay. position only. Okay. After this you will be pushing it like this and आपको उसमें just vary करते जाना। अपने हाथ को अपने थाइस के ऊपर रखेंगे so the stretch would be better. वैसे हम दोनों हाथ रखें थाइस के ऊपर एंड अपने बॉडी को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आएगा।
वंस यू आर डन फ्रॉम वन साइड, आपको दूसरे साइड से भी ट्राई करना है। दूसरा पैर अभी चेयर के ऊपर जाएगा एंड देन यू विल बी स्ट्रेचिंग। ये सारे स्ट्रेचिंग्स की इंटेंसिटी हाई है एंड बिकॉज वी आर डूइंग ऑल ऑफ देम, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आएगा आपके एंटायर बॉडी। Relax thereafter. Relax. Now go for the middle sideward split now. For the sideward split, अगर आप socks पहने हैं, that would be sleeping better. And because I haven't told it earlier, so if you are having any kind of towel, stool या कोई सा भी कपड़ा आपके आसपास हो जिसको आप अपने पैर के नीचे रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। एंड योगा मैट में नहीं करेंगे, ज़मीन पर करेंगे बिकॉज इट वुड बी स्लीपिंग गुड। सो आप उसमें पैर रखेंगे एंड उसके बाद दोनों हाथ आपके ज़मीन पर रहेंगे, देन यू विल बी स्लाइडिंग एंड देन यू कैन ट्राई एंड that would be better for slipping the leg completely. You can wear socks, but कुछ exercises हैं कि इसमें we will be not able to perform with socks. So you can put it on anything. I'm using doormat, but you can try anything. You can see what would be happening. If I'm putting it, it would be sleeping on one wall. Means क्योंकि फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस है, तो आपका एंकल हल्का सा ऊपर रहेगा। फ्रॉम दिस पोजीशन दोनों हाथ आपके ऊपर रहेंगे, दोनों हाथ जमीन पर रहेंगे, एंड यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेच इट। That way you can do and try to be comfortable. दोनों पैर के नीचे आप रख सकते हैं and try to stretch as much forward as you can and go for the complete middle sideward split. Then I am telling what you have to do from that position. Manish, I'm fine. हल्का सा और stretch कीजिए, मैंने दीजिए उसको आगे। फील द प्रेशर, पीछे वाले घुटने को जमीन पर रखिए एंड फिर बैठने की कोशिश कीजिए, हाथ धीरे धीरे पीछे लाइए। So try everyone, go to the extreme position now and hold for few seconds. Feel the pain, count it in your mind, deeply inhale and exhale, लंबी गहरी सांस लेंगे, बॉडी को उसी पोजीशन पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 कोशिश से अपना अपर बॉडी सीधा कीजिए, मीन्स दोनों हाथ के ऊपर आपका वेट आएगा। उंगलियों को हल्का सा ऐसा स्ट्रेच रखिए आपको जमीन पर जो आपने रखा। Yeah. Now try with other direction. Then we will be performing it again. Split it completely. जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे। After that deeply inhale and exhale, उसी पोजीशन पर होल्ड कीजिए। Hold for few seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Feel the pain. अपने नीज को कम्प्लीटली नीचे पुश कीजिए, उसी पोजीशन पर थाई आप कम्प्लीटली नीचे पुश रहेगी। Feel the pain. Just try to hold. It would be improving the significant portion of the side split. जितना अगर आप जमीन पर बैठने में अगर दिक्कत हो रही है उसमें, तो डे बाय डे वो improve. Relax. The more you can go into that, फिर उसमें आप बैकवर्ड बेंडिंग को इंक्लूड कर सकते हैं हनुमान आसन के लिए। लाइक अगर आप मिडिल स्प्लिट करते हैं उसके बाद आप आपकी बॉडी सामने स्ट्रेट है, लेट्स से इट इज इन द मिडिल, and you would be doing the backward bending and it would be becoming more advanced, and that way we can proceed, but that would be requiring a significant portion of the backward bending. So after this what we have to do once the middle split and work on that, and then we would be using the chair for making it more. Then other things are also remaining, so try to from this position again you can have it over the
forehead or on the any kind of cloth, or if you are wearing socks. So what you have to do, दोनों हाथ आपके बीच में है. From this position up to a point you are going. Let's say I am going to this position only. Then I will be moving the hands backward. आप देख सकते हैं अपने ankles का orientation. Ankles हमेशा raised है. Ankle is not like this. Ankle is not flat. It is always raised. Then आप अपने हाथ को हल्का सा धीरे धीरे पीछे ला रहे हैं. एक हाथ बस आपका पीछे जाएगा, दूसरा हाथ सीधा रहेगा. Once you are getting the way, then आप हल्का सा और stretch करेंगे, दूसरा हाथ पीछे जाएगा. And then you would be able to sit completely into that. इस पोजीशन पर सिट होने के बाद आपको अपने नीज को बाहर की तरफ पुश करना है to make it more comfortable as compared to earlier. हल्का सा आप यहाँ से फॉरवर्ड पुश करेंगे. दोनों हाथ आपके दूर हैं, पास नहीं है. जितना भी आपके हाथ आपके नीज के पास रहेंगे उतना अच्छा रहेगा. And then you are trying to stretch in this position. अपनी बॉडी को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे. And that will be making your middle split a bit better. Try. या पहले अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएंगे, फिर हाथों को पीछे लेकर के आएंगे, फिर एक हाथ आपका पीछे जाएगा, दूसरा हाथ भी पीछे जाएगा. उनमें से दोनों हाथ अभी नीज के पास सामने रखिए एंड उसे स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए. हाथ नीज के नीचे रहेंगे एंड उसे फैलाइए. मीन्स आप अपने हाथ से अपने नीज को पुश कर रहे हैं पीछे की तरफ. Yeah, Nishan, try to sit. Do once again. It was better. Try once again. So we have to increase the stretching beyond like 150 or 160. Then it would be going 180 degree. So for that, the stretching which we are doing till now, all of them are useful. You have to just increase the holding timing of that, and it would be gradually improving. Along with that, you can use the wall for this. Means आप इसमें wall का भी use कर सकते हैं middle split को improve करने के लिए. Just जब हल्का सा difference बचेगा, so what we can do, like let's say I was falling to the middle and after the position हल्का सा gap बचा हुआ है. So I will be going to this position. In the same position जैसे करेंगे करके तो वैसे ही आगे. And then आपका हल्का सा गैप रहेगा इन बिटवीन एंड आपके दोनों हाथ पीछे हैं. पहले आप अपने दोनों हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे. ट्राई टू स्ट्रेच योर बॉडी विद दैट. एंड वंस इट इज देयर, देन आफ्टर एक हाथ पीछे आएगा, एक हाथ आगे रहेगा. यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेच एंड आफ्टर दैट हल्का सा गैप फिर भी रहेगा. लाइक देयर वुड बी अ लिटिल बिट गैप. सो अभी आपके दोनों हाथ नीचे की तरफ पुश करेंगे, आप पीछे की तरफ, एंड देन आपका पैर और भी स्ट्रेच होता है. Then you will be doing a bit of sideward twisting. आप हल्का सा हाथ को साइड में लेकर के जाएंगे, अगले हाथ पुश करेंगे, and in that way you can go till 180 degree. इस पोजीशन में होल्ड करना भी इजी रहेगा and you will be able to perform that completely. एक हाथ आपका ऊपर जाएगा, एक हाथ आपका पीछे जाएगा, again you will be pushing, and that way it will be going till 180. या ट्राई डूइंग एवरीवन. पहले आपका हाथ पीछे था, आपने अपने दीवार पर हाथ को पीछे से पुश किया. आपका एक हाथ दीवार पर जाएगा, एक हाथ पीछे रहेगा, उसका कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे. एक हाथ आगे रहेगा, एक हाथ पीछे रहेगा. मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप अपने हाथों की पोजीशन को डिफरेंट वे में चेंज कर रहे हैं, एंड दैट वुड बी यूजफुल फॉर मेकिंग द मिडल स्प्लिट 180 डिग्री. एंड आपका होल्डिंग एक तरीके से इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी स्टेशनरी हो जाएगी तो होल्डिंग डिफिकल्ट होगी, बट आपकी बॉडी में, अपर बॉडी में मूवमेंट होता रहेगा, तो इट वुड बी ईजियर फॉर द लेग्स टू मतलब डाइवर्ट the mind from the painful position. हल्का सा साइड में ट्विस्ट करेंगे एंड उसके बाद ट्राई कीजिए पुश करने के लिए. हाथ आपका साइड में जाएगा एंड आप उसके बाद ट्राई कर रहे हैं 180 से इंक्रीज करने के लिए. somehow you would be able to do. आपके दोनों पैर के एंकल्स जो है वो दीवार पर या फिर जिस चीज़ से भी आप सपोर्ट ले रहे हैं उसमें लगने चाहिए, एंड देन इट वुड बी गोइंग. Repeat the technique and somehow it would be helpful for you in the middle split.
Relax. Come back. Come back. We can do similar kind of thing with the folded knees. How it would be, I'm showing. Then you can try. आप इस पोजीशन पर हैं, आप यहाँ तक कभी फोल्डेड नीज के साथ हैं। After this position, try to sit अपने knees को हल्का सा wide open करने की कोशिश कीजिए and हल्का सा gap रहेगा, try to stretch it completely and till this position it is fine, then try to fold it with ball. It would be a bit painful as compared to earlier one क्योंकि इसमें पैर completely stretch नहीं हो रहा है and अगर जितना भी middle split बचा होगा वो purely इसमें आपको दिखेगा मीन्स पिछली एक्सरसाइज में वो क्योंकि आप जमीन पर बैठ गए थे तो कंफर्टेबल था उतना स्ट्रेच नहीं हो रहा था इसमें अगर मिडिल स्प्लिट हल्का सा भी बचा हुआ होगा तो वो विजिबल हो जाएगा आपके प्रतिबिंब दोनों हाथ स्ट्रेट कीजिए अपवर्ड एंड चेस्ट को टच कीजिए ऑन द वॉल कुंदन सर पहले अपनी बॉडी पूरा सीधा दीवार पर खड़ा कीजिए बैठा नहीं जा रहा है, इसका मतलब वही स्ट्रेच चाहिए, राइट? बॉडी को हाँ बिकॉज इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा आपकी बॉडी वहीं पास ऊपर रह जाएगी Yeah. सो इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा कंप्लीट स्ट्रेच ऑन द मिडल वुड बी It's a good देयर stretch. सो जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है मींस जिस दिन आप उसमें कंप्लीटली बैठने लग गए विद द स्प्रेडेड लेग्स दैट मींस कि आपको मिडिल स्प्लिट में 180 से एक्सटेंडेड नॉर्मली आप जा पाएंगे एंड आपका वही स्ट्रेच रिमेनिंग है क्योंकि इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आपके उन्हीं मसल्स में स्ट्रेच आएगा ट्राई टू डू वंस अगेन एवरीवन मनीषा फाइन थोड़ा एंकल्स को वाइड कीजिए इफ पॉसिबल इट वुड बी मेकिंग इट मोर feel the stretch हो जाएगा try to straight the upper body later like currently you are doing with bed but later ऐसी जगह में ट्राई करिए कि जहाँ पास वॉल रहेगा तो उससे क्या होगा कि एक बार आप उसमें डिफरेंस फील कर पाएंगे मीन्स बेड के साथ भी हो सकता है बट क्योंकि वॉल ऊपर तक स्प्रेडेड है तो उसमें आप अगर अपर बॉडी को टच करते हैं सो दैट वुड बी बेटर इन कंपैरिजन टू बेड एंड चेयर के साथ भी सेम स्ट्रेचिंग्स कीजिएगा आई वुड बी प्रोवाइडिंग रिकॉर्डिंग सो लेटर यू कैन सी रिलैक्स एवरीवन रिलैक्स moving to the next stretching and that is the sideward split again we would be using the wall or the chair it would be taking it beyond 180 also if you are not having if you are having 180 तो 180 से beyond जाएगा अगर 180 नहीं है तो पहले वो complete होगा what you have to do आपको अपने दीवार को and now what you have to do firstly put the hand on the edge and you can see just chair के साथ आप उसमें middle split कर रहे हैं and not the middle split side split कर रहे हैं so from this position आप इसमें पहले अपने घुटने को जमीन पर ही रखेंगे घुटना आपका जमीन पर नहीं मिलेगा अदरवाइज सपोर्ट नहीं मिलेगा पहले आपका पीछे वाला पैर कंप्लीटली स्ट्रेच हो रहा है एंड आफ्टर दिस पोजीशन आप अपने पीछे वाले पैर को पहले स्ट्रेट करेंगे एंड फ्रॉम दिस पोजीशन पुश द पैर विद डाउन दोनों हाथ आपकी जमीन पर एंड देन यू आर स्ट्रेचिंग इट टिल दिस पोजीशन जितना ज़्यादा आप इसे परफेक्ट करना चाहेंगे उतना आपको सामने देखना पड़ेगा इधर उधर मत देखिएगा क्योंकि अगर मैं हल्का सा भी टेढ़ा देख रहा हूँ इफ़ यू आर यू कैन सी आई एम व्यूइंग टॉवर्ड कैमरा सो मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ तो मेरा ये हल्का सा डिफॉर्मेशन आ चुका है बट इफ आई वुड बी लुकिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नाउ इट इज गॉन यू कैन सो यू कैन जस्ट फील द डिफरेंस कि आपके अपर बॉडी किस तरफ ओरिएंट हो रही है उससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है तो हमेशा जब आप साइड स्प्लिट कर रहे हैं सामने देखना है मिडिल स्प्लिट कर रहे हैं उसमें भी सामने देखना है दीज माइन्यूट थिंग्स हेल्प्स अ लॉट व्हेन वी आर स्ट्रेचिंग क्योंकि हल्की हल्की चीज़ों से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है आपकी स्ट्रेचिंग ट्राई कीजिए इस स्ट्रेचिंग को एंड यू वुड बी एबल टू परफॉर्म इट एंड आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा पीछे वाला घुटना जमीन पर रहेगा घुटना पीछे की तरफ स्किट करेगा
अपनी बॉडी को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे उसके बाद, जितना भी स्ट्रेट कर सकते हैं। आप अपने हाथ को थाइस के ऊपर रख सकते हैं अगर ज़मीन पर नहीं जा रहा है। या पूजा, बिकॉज यू आर हैविंग ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं आप साइड में रखने के लिए। यूजुअली आई डोंट यूज़ ब्लॉक बिकॉज यू आर हैविंग देयर, सो यू कैन ट्राई। एक पैर से होने के बाद दूसरे पैर से भी सिमिलर वे आप स्ट्रेच कर पाएंगे। ये जो पीछे वाला पैर है वो थोड़े टाइम के बाद उठेगा ना जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। मीन्स पीछे वाला तो पहले स्ट्रेच हो जाएगा। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? सुनाई नहीं दिया था। मतलब मुझे समझ नहीं आया, मैं सुनाई तो मुझे पीछे वाला जो पैर है वो स्ट्रेट होना है कि वो नीचे ही रहेगा टच? वो ज़मीन पर टच होकर के स्ट्रेट होगा। हाँ वो हो नहीं रहा है स्ट्रेट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। स्ट्रेट नहीं हो रहा है पीछे वाला, वो टाइम लगेगा अभी स्ट्रेचिंग। Do once again, then I can tell if anything. एक बार फिर से कीजिए, then I can tell about that. मनीषा, स्ट्रेच कीजिए पीछे वाले पैर को, हल्का सा और पीछे स्ट्रेच कीजिए। वेरी गुड, हल्का सा और फील करिए स्ट्रेच। This exercise really is too much effective. क्या कहा कुंदन सर आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आया। I'm telling that this exercise is really too much effective. हाँ, क्योंकि आपका पहले से ही ओपन है वो मिडल स्प्लिट और साइडर स्प्लिट का पार्ट, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है 180 से इंक्रीज़ करने के लिए। एंड जिनका 180 नहीं होता उसके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। एंड पेन इन सभी स्ट्रेचिंग्स में ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्ट्रेचिंग्स विच वी डू इन क्लास। क्लास में भी हम ये काफ़ी सारी चीज़ें इससे उठा करके करते हैं क्लास में, बट द थिंग इज़ की इंटेंसिटी इज़ नॉट दिस मच हाई। इसमें आप टाइमिंग अगर देखेंगे किसी भी एक्सरसाइज का, तो दैट इज़ यू कैन से एज कम्पेयर टू द क्लास वो टाइमिंग ज़्यादा है होल्डिंग का, एंड उसमें आप ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, सो इट कम्स विद दैट। एंड द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज़ नाउ द हिप जॉइंट ओपनिंग विद द चेयर अगेन। एंड दोनों पैर आप अपने चेयर पर रखेंगे लाइक दिस, एंड बिकॉज अभी काफ़ी सारी चीज़ें बात करें, सो आई विल बी एक्सटेंडिंग 10 मिनट्स अराउंड। So put it on the edge like this. Put it on the edge like this and try to stitch it in the middle. You can see knees are going sideward. Knees अभी ये fold नहीं हो रहे हैं, ऐसा सामने नहीं आ रहे हैं, ये साइड में ओपन है। अगर ओपन नहीं हो रहे हैं साइड में, तो आप इसे चेयर को पकड़ के ऐसा पुश कर सकते हैं साइड में स्ट्रेच में। हमेशा कम्प्लीटली अंदर तक जाइए, चेयर के दूसरे पैर पर जो अंदर की तरफ है उसे टच करने की कोशिश कीजिए। रचना उस पोजीशन तक अभी आपका स्ट्रेच हो चुका है। अभी अपने बॉडी को हल्का सा मूव कीजिए चेयर से, मीन्स जिससे आप और अंदर तक स्ट्रेच कर पाए।
relax. Relax, everyone. Now coming a little bit toward ankle means for the लाइक अभी हमने इसका किसी का भी एप्लीकेशन नहीं देखा है जितना भी अभी आप तक आपने जितना भी स्ट्रेच किया है दैट इज जस्ट फॉर मेकिंग द लेग्स मसल्स completely open क्योंकि application would be different kind of asana which we can do. So I am working on the ankle part now, then we can see few other things. So what it would be, आप इस पोजीशन पर हैं जमीन पर मीन्स आप इस पोजीशन पर हैं लाइक यू कैन से मार्जिनली आसन की पोजीशन से हैं आप आपका पीछे चेयर पर पैर रख रहे हैं आप एंड उसके बाद आप जमीन पर रखते हैं तो आप अपने लाइक नी को हल्का सामने लेकर के जाएंगे पैर एज पर ही रहेगा आप अपने एंगल को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं फ्रॉम दिस पोजीशन इफ इट इज विजिबल व्हाट आई वाज डूइंग इसमें सामने वाले पैर का कोई रोल नहीं है एक ही पैर का रोल है बिकॉज इस पोजीशन से कंफर्टेबली आप कर पाएंगे आप हल्का सा अगर मैं कैमरा नीचे करूँ सो आप देख पाएंगे कि इस पोजीशन पर पहले मैं हूँ मार्जिनली आसन की पोजीशन यहाँ से आपने घुटना जमीन पर ही रहेगा हल्का सा पीछे गया पैर पैर अपनी कंप्लीटली एज पर स्ट्रेट हो चुका है एंकल के लिए फ्रॉम दिस पोजीशन अब यहाँ से आप अपनी बॉडी को हल्का सा स्ट्रेट करेंगे एंड एंकल के ऊपर हाथ रखेंगे एंकल को नीचे की तरफ पुश करेंगे व्हाट वुड बी हैपनिंग बाय दिस आप अपने पैर को हल्का आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेचिंग के अनुसार व्हाट वुड बी हैपनिंग द एंकल पार्ट यू कैन सी यहाँ से कितना ज़्यादा स्ट्रेट हो चुका है नॉर्मल कंडीशन में अगर आप ये पैर ऐसा कंप्लीटली जीरो यू कैन से 180 डिग्री ऐसा स्ट्रेट हो सकता है सो फॉर गेटिंग दैट वी आर डूइंग दिस एंड दैट वुड बी हेल्पफुल इन मैनी अदर स्ट्रेचिंग्स एप्लीकेशन पार्ट आपके जो मैं बता रहा हूँ जस्ट फर्स्ट डू दैट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से सिर्फ आपके पैर की उंगलियों वाला पार्ट और उसके हल्का सा ऊपर वाला पार्ट चेयर पर रहेगा बाकी पार्ट हैंगिंग रहेगा फिर उसके बाद सर एंकल को टच कीजिए हल्का सा पैर को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे अपनी स्ट्रेचिंग के अनुसार एंड उसे नीचे की तरफ पुश कीजिए सभी लोग ट्राई कीजिए बिकॉज these minute things help when you are doing or performing overall आसन पेन कहाँ आना चाहिए सिर्फ एंकल में क्या हल्का सा आ रहा है ज्यादा नहीं आ रहा है एंकल पर आएगा एंकल के साइड में यहाँ पास आएगा ओके इसीलिए मैंने बोला कि पैर आप हल्का सा आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं शुरू में हो सकता है कि घुटना आगे जाएगा तब स्ट्रेच आएगा वो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी इट वुड बी देयर एंड द सेम वी कैन परफॉर्म विद द बॉल आल्सो फॉर दैट अगेन हमें स्ट्रेचिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच एंकल रीजन पर है रिलैक्स कर सकें फ्रॉम दिस पोजीशन आप इस पोजीशन पर हैं चेयर पर एंड यू कैन सी मेरी काफ़ी सारे स्ट्रेचेस चेयर के साथ रहते हैं सो like because all of them are modified in that way only. So somehow it is helpful for if we are doing without chair तो इसके comparison में काफ़ी सारे स्ट्रेचिंग्स improve होते हैं इस पोजीशन से आपको क्या करना है once you are in this position आपका एक काम जमीन पर ही रहेगा from this position अभी आप अपने घुटने को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं हो सकता है कि हल्का सा बैलेंस का दिक्कत हो तो आप अपने घुटने को हल्का सा पीछे करेंगे from this position you can push it down इसका जो एडवांसर वर्जन रहेगा उसमें ये आपका जो पैर अभी जमीन पर है ये पैर अभी कंप्लीटली सामने स्ट्रेट हो सकता है ये आपके नी जॉइंट के लिए है अपर नी के जो ऊपर के हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उसके लिए एंड पूजा इफ पॉसिबल अपने एंकल को स्ट्रेच बिकॉज द मेजर स्ट्रेचिंग इसमें भी पैर का स्ट्रेच
इसमें स्ट्रेचिंग नहीं है। इसमें स्ट्रेच है कि आपका हाथ कितना आपके नी को नीचे की तरफ पुश कर पा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेच होते होते यहाँ ऐसा पेट तक आएगा। सो उसके लिए ये बेसिक है, एंड वंस यू विल बी एबल टू परफॉर्म हम इसे पेट तक ले जा सकेंगे। एंड जो नीचे वाला पैर है उसको और एडवांस करने के लिए हम इसके सामने इस पोजीशन को ले जा सकेंगे, बट फॉर दैट वी रिक्वायर एडिशनल स्ट्रेचिंग। यू कैन जस्ट लुक एट दिस एडवांस स्ट्रेच which is which can be done but after a certain period of time. सो आप इसमें देख सकते हैं जिनका 180 से ज़्यादा ओपन हो जाएगा मिडल स्प्लिट, वो इस पोजीशन पर जा सकेंगे। एंड इसमें इजीली आप एंकल ट्विस्ट भी कर पा रहे हैं, एंड मिडल स्प्लिट भी हो रहा है, सामने घुटना भी फोल्ड। या सर, आपका जो कैमरा है थोड़ा सा चेयर के साइड पे करके एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? हाँ, लेट्स से व्हाट आई वाज सेइंग कि लेट्स से दिस इज चेयर, अभी ठीक दिख रहा है? यस सर। तो आपने जैसे चेयर पर अपने पैर को रखा है, इतना हल्का सा पीछे है जिससे आपका घुटने के नीचे वाला जो पार्ट है वो एज पर टच हुआ है। फ्रॉम दिस पोजीशन आपका भी पैर नीचे की तरफ है, ये इजी वाला है। जब आपका डिफरेंट वाला होगा उसमें ये पैर ऐसा 90 डिग्री पर आएगा। दोनों सेम है, बट इसमें हल्का सा डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, दोनों स्ट्रेचिंग में आपका एक हाथ जमीन पर रहेगा सामने की तरफ लाइक दिस, एंड दूसरा हाथ आपका पीछे जाएगा, एंड यहाँ से आपको नी को नीचे पुश करना है। ओके सर। दैट इज लाइक एंकल को नीचे पुश करना है, एंड क्योंकि नी के नीचे वाला पार्ट टच हो रहा है तो उससे सपोर्ट मिलेगा। द सेम थिंग यू हैव टू डू इफ इट इज दिस पोजीशन। तो इस पोजीशन में आपका दूसरा वाला हाथ घुटने के ऊपर आ जाएगा, एंड फ्रॉम देयर यू विल पुश। सो यू कैन सी पैर ये कंप्लीटली पेट तक आने लगेगा। यस सर, थैंक यू सर। Bye everyone. After that we can take few things and we can relax the mind. अभी तक अगर आप स्ट्रेचिंग का मतलब अगर अभी आप पूरे सेशन का कंक्लूजन देखेंगे जो जितना भी हमने अभी तक किया है, सो हर स्ट्रेचिंग किसी न किसी पर्टिकुलर छोटी स्ट्रेचिंग पर फोकस कर रही है। मीन्स जैसे ये वाली स्ट्रेचिंग थी जो कि आपके सिर्फ एंकल पर फोकस कर रही है, बट एट द सेम टाइम आपका लेग भी स्ट्रेच हो रहा है। तो व्हाट ऑल इज ऑन गोइंग कि अगर आप ऐसा नहीं है कि आप मिडिल स्प्लिट में आपका एंकल का यूज़ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके साइडवर्ड स्प्लिट में आपका एंकल का यूज़ नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ हैमस्ट्रिंग एंड मिडिल स्प्लिट में ही फोकस करना है। अगर आपके पैर की लाइक फ्रॉम द टो से लेकर के अगर आपका कंप्लीटली हिप जॉइंट तक ईच एंड एवरी मसल किसी न किसी डिफरेंट स्ट्रेच में स्ट्रेच हो चुकी होगी, तो जब आप ओवरऑल कोई सा भी आसन करेंगे, इवन आप बैकवर्ड बेंडिंग भी करेंगे जिसमें हल्का सा लेग स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व है, या बैलेंसिंग पोज का सेशन करेंगे जिसमें लेग स्ट्रेचिंग हल्का सा इस्तेमाल होगी, उन सभी स्ट्रेचिंग्स में आपको डिफरेंस फील होगा। आपका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है आसन का वो इंक्रीज होगा, एंड समहाउ ऑल द थिंग्स आर इंटर कनेक्टेड। सो इट इज़ नॉट लाइक कि अगर एंकल स्ट्रेचिंग हम कर रहे हैं तो उससे मिडिल स्प्लिट पर हेल्प नहीं होगी या किसी और चीज़ पर। एट द एंड वी वुड बी लाइक टेकिंग द थिंग्स कि अभी हम देखते हैं कि आपका कितना लेवल का हो रहा है। तो नेक्स्ट थिंग इज हिप जॉइंट ओपनिंग, जो कि हम ले सकते हैं डायरेक्टली कि अभी आपको पैर को सिर के पीछे ले जाना है, एंड इन दैट वे लेटर वी कैन सी कि आपका अभी मिडिल स्प्लिट क्या है एंड साइडवर्ड स्प्लिट का पोजीशन क्या है, एंड योनि मुद्रासन एंड कंप्लीटली ट्विस्टिंग इन द गोखिलासन। 5 चीज़ें हैं जो कि मुझे चेक पॉइंट है, जो कि आपको एंड ऑफ द सेशन लाइक दिस पार्ट हमें उसको चेक करना है। सो मूविंग वन बाय वन, फर्स्ट थिंग इज हिप जॉइंट ओपनिंग। तो आप इस पोजीशन तक अपने पैर को लेकर के जाएंगे, आपका एंकल जॉइंट के ऊपर हाथ रहेगा, दूसरा हाथ काफ मसल के ऊपर रहेगा। फ्रॉम दिस पोजीशन ट्राई टू इनहेल एंड स्ट्रेच इट बैकवर्ड and try to take it to it. Somehow it would be touching the head at least. If it is touching the head, I can tell further. Try कीजिए सभी, पैर को सिर के पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए। हिप जॉइंट स्ट्रेचिंग की मोस्ट ऑफ द स्ट्रेचिंग इसमें कवर हो चुकी हैं। एडिशनल और भी स्ट्रेचिंग्स थी, बट somehow these were better than that. And
ट्राई टू स्ट्रेच इट कम्प्लीटली। पूजा में नीचे वाला पैर कम्प्लीटली स्ट्रेट कर दीजिए, सभी लोग स्ट्रेट कर दीजिए नीचे का पैर। Try to touch until the head. After that, try to move the hands on the leg. इस पोजीशन तक होने के बाद आप अपने हाथ को हल्का सा आगे पीछे मूव करेंगे एंड आफ्टर इट इज लाइक अपने नेक को हल्का सा बेंड करेंगे। अगर आपके नेक के पीछे हल्का सा भी टच हो रहा है और इफ इट इज टचिंग हेड पार्ट, मतलब हेड पार्ट भी अगर वो टच हो रहा है, फ्रॉम दिस पोजीशन ट्राई टू दोनों हाथ से पकड़े रहेंगे एंड अपने बॉडी को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, पीछे की तरफ लेटने की कोशिश करेंगे। इस साइड से अगर आप देखेंगे मेरा पैर अगर सिर्फ इतना जा रहा है, अगर मेरा पैर सिर्फ इतना जा रहा है, इस पोजीशन से मैं लेटने की कोशिश करूंगा एंड ट्राई करूंगा कि जितना टच है उतना टच ही रहे हमेशा। एंड आफ्टर दिस पोजीशन आई विल बी ट्राइंग टू टच इट मोर, अपने सिर पर स्लाइड कराने की कोशिश करूंगा एंड आफ्टर दिस आई विल बी ट्राइंग टू ले डाउन कंप्लीट। हल्का सा कैमरा की ओरिएंटेशन में चेंज करता हूँ, इट विल बी इजियर। आपका पैर यहाँ तक जा रहा था, इससे ज़्यादा जा नहीं पा रहा है। आफ्टर दिस आपको हल्का सा हाथ का ओरिएंटेशन चेंज करना है, अपने आप को उसी पोजीशन पर लेटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप बैठ के कर पा रहे थे लेट के भी आप कर पाएंगे। आफ्टर इट इज डन देन आप अपने घुटने को फोल्ड कीजिए, हल्का सा उसे बैकवर्ड ले जाइए, पैर को स्ट्रेट कीजिए, हल्का सा वो इंप्रूव होगा। आफ्टर दैट आपको यहीं पास उसे लेटने की कोशिश करना है एंड दैट वुड बी हेल्पिंग। ट्राई टू टेक कुंदन सर, नेक को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, ज़मीन पर लेटने की कोशिश कीजिए, दोनों हाथ से पैर को पीछे पुश कीजिए। मनीषा मैम, इट इज़ गोइंग वेरी गुड। लेटने की कोशिश कीजिए, वेरी गुड। सिर पर स्लाइड कीजिए पैर को, वेरी गुड। नेक को स्ट्रेट कीजिए, हाथ से पुश कीजिए पैर को, वेरी गुड। हल्का सा और पुश कीजिए। रशिका मैम, दैट इज़ फाइन। पैर सामने कीजिए, पुश कीजिए दोनों हाथ से उसे। रखते हुए लेटने की कोशिश कीजिए, वेरी गुड। अभी उस पोजीशन पर अच्छे से लेटने की कोशिश कीजिए। वाई वी आर गोइंग फॉर लेइंग डाउन, अगर सवाल है अगर, तो इसका मतलब हम क्यों लेटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लेटने की कोशिश करते हैं आपकी कंप्लीट स्पाइन स्ट्रेट होने की कोशिश करती है एंड अगर आप सामने बैठे हुए हैं तो स्पाइन आपकी इधर है, आपका उस स्पाइन का कोई रोल नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप लेटने की कोशिश करेंगे आपकी स्पाइन का ओरिएंटेशन ऐसा हो गया, नाउ योर स्पाइन वुड बी समहाउ ट्राई टू ले डाउन कम्प्लीटली। सो क्योंकि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट होना चाह रही है, आपकी बॉडी पीछे लेटना चाह रही है, इन दैट वे आपकी कंप्लीट नेक उसी स्पाइन से जुड़ी हुई है। सो नेक पार्ट से आपके पैर पर फोर्स ज़्यादा रहेगा एंड दैट वे आपका पैर और भी पीछे जाएगा। बट अगर आप सामने बैठे हुए हैं तो नेक से आप उतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ द थिंग एंड इन दैट वे सिर्फ ये स्ट्रेचिंग से आपका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपने रेगुलर सेशन किया है तो अगर हिप जॉइंट सेशन जो होता है, हिप जॉइंट ओपनिंग, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचेस होते हैं और भी जो कि हम ले सकते हैं, जिससे ये हल्का सा और इम्प्रूव होता है। उसमें हम लेते हैं कि ये जो पैर जो है वो पीछे तो चला गया, लेकिन अभी घुटना मतलब जो पैर है वो ऐसा टेढ़ा है, वैसा सीधा नहीं हो रहा है, गले के नीचे नहीं आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड कि आपका 90 डिग्री पर पैर नहीं आ पा रहा है, Means ऐसा ही पैर ऐसा टेढ़ा होकर के गर्दन टेढ़ी है इस तरीके से। तो उसको 90 डिग्री पर कैसे ले जाना है, उसके लिए स्ट्रेचिंग था कि कपोतासन, एक पदराज कपोतासन की पोजीशन से आप अपने पैर को 90 डिग्री पर लेकर के जाएंगे। दैट वे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग्स वर देयर। जस्ट quickly do the middle split and sideward split so that I am able to analyze your like level कि अभी आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया है या फिर कितना ज़्यादा अभी ओपनिंग्स के बाद स्ट्रेच आया है। एक बार आप साइडवर्ड स्प्लिट कीजिए, एक बार मिडिल स्प्लिट कीजिए। आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग स्ट्रेचिंग फॉर यू इन उत्तरासन एंड देन वी कैन या साइडवर्ड स्प्लिट से स्टार्ट करेंगे। गो फॉर साइडवर्ड स्प्लिट। Very good, Rachna. Feel the stretch, deeply inhale and exhale in that position. या प्रत्याहार टेस्ट। हाथ को हल्का हल्का पीछे कीजिए, या पीछे वाले थाइस को नीचे कीजिए, मीन्स हाथ रखिए उसके ऊपर, पीछे वाले थाइस के ऊपर हाथ रखिए, थाइस के ऊपर पीछे।
गोल्डन सर ओरिएंटेशन हल्का सा गड़बड़ हो चुका है, मीन्स मिडिल स्प्लिट के चक्कर में पीछे वाला पैर टेढ़ा आ रहा है, हल्का सा उसे जमीन से उठा रहने दीजिए, बट पैर टेढ़ा मत कीजिए। ओरिएंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। या पूजा वंस गो फॉर 180 मीन्स साइड स्प्लिट कंप्लीटली करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेच कंप्लीटली, ट्राई टू सिट। दोनों हाथ को अभी ऊपर जॉइन करके उठाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू बेंड द नेक बैकवर्ड लाइक द सेकंड स्टेप ऑफ शोल्डर्स का। या वेरी गुड। सो in the starting part हल्का सा गैप था, from that position it has improved and now you can, यहाँ मनीषा उसमें अभी पहले से काफ़ी अच्छा है, जस्ट उसमें अभी काफ़ी सारा स्कोप है इम्प्रूव होने का, तो आप लगातार सेम स्ट्रेचिंग करते जाएंगे तो वो अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। Next thing is middle split. Everyone can show their middle split and then we can proceed for the last thing. As you can see, I have extended around 15 minutes kind of, because these stretchings were needed to be cleared. So try. हाथ धीरे धीरे पीछे लेकर के जाइए, जिस स्ट्रेचिंग से गए थे वैसे ही आपको जाना है। हल्का सा उसमें एक पॉइंट तक और आप अगर एक्सटेंड करती फिर हाथ पीछे रखते तो इजीली स्किप हो पाता। रिलैक्स एवरीवन, मोर और लेस यू माइट बी फीलिंग डिफरेंट, मीन्स वो ग्रेजुअली आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, बट समहाउ देन ऑल्सो आपको पहले के कंपैरिजन में लेग अपने ज़्यादा ओपन फील हो रहे होंगे एज कम्पेयर टू the part when you started the session. So next thing is the positioning of the leg in the Yoni Mudrasana, and then we can end the session. It would be hardly taking 1 or 2 minutes. So do the butterfly position. From that position, pushing the knee downward, pushing the knees completely down. Now you would be having the hand below the ankle joint. आपका हाथ पीछे रहेगा ankle joint पे. From this position आप धीरे धीरे अपने पैर को पीछे की तरफ vertical करेंगे. वर्टिकल करने का मतलब आप इसे जितना भी ज़्यादा स्ट्रेट कर पाएंगे उतना स्ट्रेट करेंगे। इनिशियली आपके पैर ऐसा ऊपर की तरफ है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू पुश द नीज डाउनवर्ड एंड स्ट्रेच इट बैकवर्ड। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होकर के ऐसा वापस आ जाएगा, बट देन ऑल्सो यू हैव टू ट्राई। एंड जो एंकल ट्विस्टिंग आप कर रहे थे उसका ये एप्लीकेशन है, जो आप नी की स्ट्रेचिंग कर रहे थे उसका ये एप्लीकेशन है। जितनी भी स्ट्रेचिंग्स हमने की है, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेचिंग्स आर हेल्पफुल इन दिस। सो लेटर इट वुड बी गोइंग कंप्लीटली इन दिस पोजीशन and we can learn this and that will be Yoni Mudrasana. Completely ankle twisting का आसन है and knee twisting का आसन। From this position, once you would be able to perform in this position, it would be happening only by practice and अलग से आपको कोई स्ट्रेचिंग नहीं चाहिए, जितना आपने सेशन में किया है उतना इम्पोर्टेंट है। लास्ट में आप ये जो भी स्ट्रेच कर रहे हैं पीछे की तरफ एंड नी को नीचे पुश कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड then later it would be going to this position and leg would be going into this. This is the advanced version of the same. Later we can just raise it from the floor. And later what we can do from the same position, we can invert it into Kardasana like this. इसमें भी एडवांसमेंट हो सकता है क्योंकि जो अभी फॉर दैट आई नीड टू वियर सॉक्स, क्योंकि अभी मेरे लाइक बोन्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हैं, मतलब हर्ट इन द सेंस अपने ही बॉडी में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। सो दैट वे उसमें नीज जब सामने की तरफ कम्प्लीटली जॉइन हो सकते हैं। सो दैट कैन बी द थिंग एंड आफ्टर दैट लाइक वी कैन गो फॉर द गोपिलासन स्ट्रेचिंग। मीन्स जो अभी आपने चेयर पर जो पुश किया है वो उसी के लिए था, या आपने ये पैर ऐसा राउंड होकर के कम्प्लीटली ऐसा सामने की तरफ पेट पर लगेगा एंड आफ्टर दैट आपका दूसरा पैर भी सेम लग सकता है। दैट वुड बी काइंड ऑफ दिस स्ट्रेचिंग लाइक इफ इट इज विजिबल। सो आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों पैर ओपन थे एंकल से, सो नाउ इट इज टिल दिस पोजीशन। लेटर इसमें हम इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए इसमें हम ऊपर होल्ड कर सकते हैं, मीन्स नीज पर बैलेंस कर सकते हैं। इस पोजीशन से ऐसा ऊपर दोनों हाथ कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन माय पोस्चर
and if you haven't seen, I will be showing later. And the next thing which we can do, हम इसे मयूरासन जैसा उठा सकते हैं, मीन्स गोखिलासन ऊपर उसका नाम, and means एक शिखिया से किया गया है, and it is not mentioned earlier, but in advanced yoga means उसका meaning resemble करके लिया जा सकता है. So I will be just showing that, and then we can end the session. That would be the last part. It is just to explain कि कितना ज़्यादा एप्लीकेशन हो सकता है सिर्फ एंकल ट्विस्टिंग का, उसमें कोई और अलग से चीज़ नहीं है, सिर्फ एंकल का ही यूज़ है. सो हम नॉर्मल स्ट्रेच में मिडिल स्प्लिट, साइड स्प्लिट उसी पर फोकस करते रह जाते हैं, एंड एंकल पर हम कभी फोकस ही नहीं कर पाते हैं. सो आई विल बी जस्ट शोइंग दैट नाउ. And it is on the thumbs, so that makes a bit difficult for that. अगर ये normal ऐसा flat palms में रहता, so that might be easier, but it would be like this. So holding can be till 1 minute, as similar to the Mayurasana or Padma Mayurasana. So इसमें डिफिकल्टी कोई नहीं आती है. एक बार आपका पैर अगर आगे आ जाता है तो इजी हो जाता है. देखने में डिफिकल्ट है, देखने में उतना डिफिकल्ट, मतलब करने में उतना डिफिकल्ट नहीं है. जस्ट आपको एंकल ट्विस्ट करना आना चाहिए, और नॉर्मली हम पद्मासन में लाइक पद्म मयूरासन बैलेंस कर सकते हैं. So that was all in today's session. If you have to ask anything or having any kind of doubt, आप यहाँ पास भी और WhatsApp पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं. सेम. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Avinash. Very good class. बहुत अच्छा class. Lot of good stretching. I think splits करते वक्त I figured that थोड़ा सा हल्का सा नीचे गया, हल्का सा I could feel the stretch in the inner thighs, you know, थोड़ा सा हल्का सा नीचे गया. या और मतलब सेम स्ट्रेचिंग्स करेंगे तो वो इजीली नीचे जा पाएगा. एंड इसमें मतलब कि काफ़ी मतलब इंटेंसिटी हाई थी. इंटेंसिटी इन द सेंस कि यू वर पुशिंग इट मोर एज कम्पेयर टू व्हाट यू डू इन द नॉर्मल क्लास. सो उसमें हम सिर्फ आधा घंटा कर रहे हैं स्ट्रेच, इसमें अभी आपने 1 घंटे 15 मिनट स्ट्रेच किया. सो द टाइमिंग्स ऑल्सो मैटर फॉर द सेम स्ट्रेचिंग. मीन्स हम कोई सी भी चीज़ कर रहे हैं, इवन जो हम क्लास में करते हैं उसको अगर हम 1-2 स्ट्रेचिंग और इन्वॉल्व करके अगर नहीं अच्छी थी, काफी नई स्ट्रेचिंग थी और काफी नए मसल्स स्ट्रेच हुए हैं. या मेरा You'll be काफी giving ज़्यादा स्ट्रेच recording हो for रहा है. this class? You'll be giving या प्रीवियस क्लास का भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसका भी. ठीक है. Okay. I think हफ्ते में एक बार भी stretches कर दें. हाँ? मीन्स रिकॉर्डिंग पार्ट इज फ्रॉम बोथ. मीन्स एक में जिसमें सभी का दिख रहा है, एंड दूसरी रिकॉर्डिंग है जिसमें सिर्फ मेरा मतलब कि पोस्चर है. हाँ, that is fine. Practice करने के लिए. I think Means अगर दोनों चीज़ है कि हफ्ते में एक बार भी ऐसा ये स्ट्रेच कर लेना, it will improve so much in other things. हाँ, मतलब अगर आपकी बॉडी स्टिफ, मतलब क्योंकि रेगुलर सेशन चल रहे हैं तो बॉडी स्टिफ नहीं हो पा रही है, एंड दैट मेक्स कि आप मतलब योगा की हैबिट में, एंड नाउ वन डे यू आर स्ट्रेचिंग इट मोर. सो नेक्स्ट टाइम अगर आप लेग स्ट्रेचिंग का सेशन करेंगे तो अपने आप ही उतना ओपन होने लगेगा. एंड दैट्स व्हाई एडवांस वर्कशॉप में मतलब कि फोकस कर रहा हूँ कि क्योंकि इन फ्यूचर इट वुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेशन. जिनको भी ज़्यादा कठिन सीखना होगा, we can like do days kind of different timing because that much would be sufficient. What are you planning to take next Sunday? It would be sideward twisting, I think. Means I don't know because backward हो चुका है, and forward का I don't think उतना ज़्यादा, मतलब एक ही 2 स्ट्रेचिंग है जैसे स्टैंडिंग पूर्वासन मीन्स इंसर्टिंग द बॉडी इनवर्ड. दैट इज द पार्ट, बट मोर और लेस हैमस्ट्रिंग मसल का ही यूज आ रहा है. तो जो हमने लेग स्ट्रेचिंग किया वो सारा उसमें यूज आ चुका है, एंड लेग हमने बैलेंसिंग पोजेस कर चुका है. सो नाउ कम्स द शोल्डर ओपनिंग, बट शोल्डर ओपनिंग उसी में कवर हो जाएगा जितना रिक्वायर्ड होगा. साइडवर्ड ट्विस्टिंग में काफ़ी सारा एडवांस है जो कि हम कवर कर सकते हैं.
which I haven't touched. Means उसमें different angle से जानो शीर्षासन की position से twist कर सकते हैं, अनुनासिक से twist कर सकते हैं. So twisting part is too much. You can say scope is too much in that for advanced. So we have 2 more classes left or 1 more classes left for this month. जितने Sunday left होंगे. अच्छा ठीक है. Okay, bye. Take care. Thank you so much. Yeah.